Good morning, students. Today I will discuss the topic water cooler. As in Unit 5, there is given some application of refrigeration and air conditioning. So, water cooler is also an application of air conditioning system. Okay. So, in this lecture, we will study about the cooling mechanism in water cooler. Okay, here we will see how the water cooler works. In Delhi, in the summer season, everyone use a water cooler in their home for the cooling. As this diagram predicts that this is a water cooler. सिंपली ये वाटर कूलर सबके घर में अवेलेबल होता है. तो इसी वाटर कूलर की क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, ये सारी चीज़ों पर रोज डिस्कशन आज की क्लास में. ओके, सो दिस वाटर फर्स्ट वी विल इंट्रोड्यूस अबाउट दिस वाटर कूलर सिस्टम. So this water cooler system is basically based on the evaporative cooler system. Okay, so it is also known as an evaporative cooler. So particularly is a device that cools air through the evaporation of water. Evaporative cooling differs from typical air conditioning system, which uses vapor compression or absorption system. Evaporative cooling works by implying water's large enthalpy of vaporization. ये कह रहा है कि ये किसी अदर टाइप के रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग सिस्टम से डिफरेंट है, बिकॉज इन अदर रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम वेपर कंप्रेशन और एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स आर यूज्ड फॉर कंडीशनिंग द एयर, बट इन दिस इवेपोरेटिव कूलर here is the use of enthalpy of vaporization. That is, water takes heat from the high temperature air and gets evaporated. And due to evaporation, as water absorbs the heat from the air gets cooled. So that cooled air is used for the conditioning. So the physical principle of evaporative cooling is the addition of water vapor into air, which causes a lowering of the temperature of the air. The energy needed to evaporate the water is taken from the air in the form of sensible heat, which affects the temperature of the air and converted into the latent heat. The energy present in the water vapor component, the air remains at a constant enthalpy value. The water vapor component or the air remains at a constant enthalpy. So this conversion of sensible heat to latent heat is known as adiabatic process because it occurs at a constant enthalpy value. Okay, so the working of water cooler is that evaporative coolers are known as swamp coolers. The cooler air from the outside, in these coolers, air from the outside is passed on over the water. The water takes up the heat from the outside air and it evaporates. वर्किंग जैसा बता रहे थे कि वाटर जो एयर है, सराउंडिंग के एयर का टेम्परेचर जाता है, वो जैसे ही इंटर करती है उसके ऊपर वाटर का स्प्रे होता है, वाटर उसके ऊपर ड्रॉप होता है, तो ये एयर वाटर के कांटेक्ट में जाता है. तो वाटर क्या करेगा, वाटर इस एयर के हाई टेम्परेचर हीट को एब्जॉर्ब करेगा और खुद इवेपोरेट हो जाता है. तो आफ्टर इवेपोरेशन इट विल मिक्स विद द एयर and due to evaporation the temperature decreases. It means the temperature of air decreases due to the evaporation. So that is the principle on which water cooler works. It means here for air conditioning no refrigeration system like VCR or absorption systems are required. It is just based on the evaporation process. So this is the diagram. In this diagram particular, this is the evaporator cool. That means this is the heat insulation, cold humid air. This cold humid air enters into the room and maintains the room temperature below the surrounding temperature. This is the duct system that is used in the home. Evaporation absorbers are used for producing less noise or vibrations. Blower motor, this is the blower motor which are used for moving the blower, and that blower will circulate the outside air into the room air, into the room. So this hot dry outside air will come in contact with the water distribution line. In water distribution line, the water is dropped from the
distribution line. Now wood wool evaporative pads, blowers are here, overflow tubes, ball float valve, and this is the recirculating water pump. This is the sum where the waters are collected, or the tank where the waters are collected, and this water is recirculated again and again by the using of this recirculating water pump. Okay, so as this recirculating water pump continuously water is brought from the outside, and the outside air enter into the water cooler, and that air has a high temperature, and the water of the cooler has a low temperature. So the temperature heat of the air is absorbed by the water, and water gets evaporated. So due to the evaporation, the temperature of air is decreasing, that the air becomes cool, and that cool humid air is entered into the room for maintaining its temperature below the surrounding temperature. Here it is given heat of vaporization 2257 kg of water, cooling 2140 BTU kilogram evaporated water. Okay. Next, various part. Well, if we talk about the various parts, so this is the first thing is the fan and vent. Fan is needed to direct the cool towards the room. These fans continuously flow cool air in the room. Water sources. Evaporative cooler use water, so it is necessary to fill the cooler with water so that the cooling can take place. Okay, evaporating cooler used water, so it is necessary to fill the cooler with water so that the cooling can take place. Next is the advantage and disadvantage of the water cooler. The first advantage is air is always available. हमें पता है नेचर में सराउंडिंग एयर हमेशा फ्लो कर रही होती है, बह रही होती है इधर से उधर, तो एयर इज ऑलवेज अवेलेबल. नेक्स्ट इज मेंटेनेंस कॉस्ट नॉर्मली लेस देन द वाटर कूल्ड सिस्टम. हम कोई वाटर कूल्ड सिस्टम यूज करते हैं तो वहाँ पर पर्टिकुलर कंप्रेसर यूज होता है, वीसीआर या वीआरएस साइकिल सिस्टम यूज करते हैं. But here not such type of systems are arranged, so that maintenance costs are normally less as compared to the water cooled system. Next advantage is in event of power failure they can transfer some heat because of the natural convection. So natural, मान लिया पावर ट्रांसफर मोटर खराब हो कुछ भी है तो फैन लगा हुआ है ऑटोमेटिक, तो अगर साइड से एयर इंटर कर रही है, वाटर है तो ऑटोमेटिकली कुछ अपने आप नेचुरल कन्वेक्शन के थ्रू हीट का एब्जॉर्प्शन करता रहता है, और कूल्ड एयर थोड़ा सा रूम इंटर होके तो टेम्परेचर को कूल करके रखता है. ये था आपका एडवांटेज. नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज इज द हेल्थ हैजार्ड्स, बिकॉज ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम आती है. एक सर्टेन टाइम के बाद वाटर कूलर फेल हो जाता है क्योंकि हमें वहाँ पे ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं होती, टेम्परेचर मेंटेन होता है. इससे में क्या होता है कि स्वेटिंग होने लगती है, स्वेटिंग पूरा बॉडी से आप में अनकम्फर्ट फील होने लगता है. तो दिस इज द हेल्थ हैजार्ड. एंड सेकंड इज मेंटेनेंस. मेंटेनेंस में प्रॉपर मेंटेनेंस है, हर साल जो है आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस कराना पड़ता है. वाटर डार्टी यूज हो रहा है तो उसके जो पेंटिंग्स वगैरह है ये कराने पड़ेगा, रस्टिंग की प्रॉब्लम होने लगती है कंटिन्यूसली. उसमें जो भी आप घास वगैरह ये सारी चीज़ें यूज कर रहे होते हैं जिसके जो वाटर फ्लो करता है वो कॉन्टेक्ट में आता है, तो ये सारी चीज़ें हमें चेंज करानी पड़ती है. दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंटेनेंस. ओके, दिस इज अबाउट द वाटर कूलर. ओके, सो वाटर कूलर सबने देख भी रखा है, सबको पता भी है वाटर कूलर के बारे में आता है कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल, व्हाट आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज. So all this you can write in your examination. So this is all about the water. Okay, thank you.